Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 10th. Now it's time of chemistry. This is the last topic of chapter number 9 or chapter number first. Application of equilibrium constant. क्या क्या application equilibrium constant की number first. The magnitude of the equilibrium constant. मतलब equilibrium constant की जो है magnitude reaction की find out करता है. The magnitude of equilibrium constant K means the extent to which a reaction can proceed, measuring the completion of reversible reaction. मतलब ये कि ये reaction कितना proceed हुआ है इसको measure करता है, कितना मतलब reversible reaction complete हुआ है उसकी measurement करता है. The value of if the value of K is larger, then the equilibrium concentration of the component on the right hand side of the reaction will be greater than the component on the left hand side of the reaction. Hence the reaction proceed to greater extent. मतलब ये है अगर K larger है तो it will proceed on forward direction. Second जो है the extent of a reaction. The tendency of a reaction to occur is indicated by the magnitude of equilibrium constant. A value of K larger than 1 means that at equilibrium, the reaction system will consist of mostly product, means favor forward reaction product formation. The equilibrium lies to the right. A very small value of K means that the system at equilibrium will consist of mostly reactants. The equilibrium position is far to the left. और फिर वापस आएगा अगर आपके पास K value small है, it's mean product formation ज़्यादा है, reactant कम है, तो आपका reaction जो है वो left को जाएगा, means reactant side पे जाएगा, backward reaction को favor करेगा. Application of equilibrium constant है predicting the direction of reaction. सही बात है. We define Q, the reaction quotient for reaction at condition not at equilibrium. क्यों जो है बिल्कुल केसी की तरह है, लेकिन ये जो है रिएक्शन की हम निकालते उस वक्त जो इक्विलिब्रियम में ना हो. के जो है वो तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, क्यों जो है वो इक्विलिब्रियम में जब नहीं है. वेयर ए बी पी क्यू आर मोलरिटीज एट एनी टाइम, क्यू इज इक्वल टू के ओनली एट इक्विलिब्रियम. जब के इक्विलिब्रियम पे है तो क्यों उस वक्त होगा जब इक्विलिब्रियम पे होगा और के बराबर होगा. फिर okay, if Q मतलब reaction quotient is greater than K equivalent means constant, then the reverse reaction must occur to reach equilibrium, that is products are consumed, mean product खत्म होंगे और reactant बनना शुरू होगा, reactants are formed, backward reaction होगा. The numerator in the equilibrium constant express decrease. न्यूमरेटर में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है ना, वो कम होगा, एंड क्यू डिक्रीजेस अंटिल इट इक्वल्स के इक्विवेलेंट या के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. If Q is greater than K EQ equilibrium, then the forward reaction must occur to reach equilibrium. Very small, 10 minus 3, reaction hardly proceed. When Kc is equal to 1, both reactant and product are present at equilibrium. Or 10 raised to power 3, very large, reaction proceed almost to completion. रिएक्शन क्वोशिएंट क्या है, द रिएक्शन क्वोशिएंट Q इज द सेम फॉर्म इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के. ये बिल्कुल K के बराबर है, लेकिन K को हम इक्विलिब्रियम पे फाइंड आउट करते हैं. इक्विलिब्रियम पे जब रिएक्शन होता है और जब रिएक्शन किसी भी स्टेट पे होता है जिसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट. Q से हम रिप्रेजेंट करते हैं. द मेजर डिफरेंस बिटवीन Q एंड K इज दैट the concentration used in Q are not necessarily equilibrium values. ये equilibrium values Q की नहीं होती, K की जो है वो equilibrium values होती है. बिफोर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से पहले क्यू सी कम होता है, के सी ज्यादा होता है. इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर होते हैं. आफ्टर इक्विलिब्रियम क्यू सी जो है वो ज्यादा है और के सी जो है वो कम है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी एप्लीकेशंस में आ रहे हैं. द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज. कंसंट्रेशन पे, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इसको इफेक्ट करता है. फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ फॉरवर्ड रिएक्शन. बिल्कुल सही है, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इनवर्स होगा बैकवर्ड और फॉरवर्ड. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट उस पे असर कोई नहीं करता. Okay, using the equilibrium constant means uses of equilibrium constant. It is also an application of equilibrium constant. Which is favored? Reactants or product? Reactant बनेगा कि product? Predict direction for a reaction. Q is equal to, आपको पता चल सकता है कि कौन से direction पे जा रहा है, forward पे कि reverse पे. Obtaining equilibrium concentrations of reactant and product.
एंड प्रिडिक्ट इफेक्ट ऑफ चेंजिंग कंडीशन, आपको पता चल सकता है कि कौन सा कंडीशन चेंज हो रहा है. ऑल द बेस्ट बेटा. दिस इज द एंड of the chapter and also of the topic. ठीक है, thank you very much बेटा. अल्लाह हाफिज.